रियल इंटरव्यू में गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करते हैं। It is a common question for all the people. If there is a उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को और उस टाइप ऑफ सिचुएशन को हम रियल इंटरव्यू में कैसे टैकल करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। सो जैसे आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों का आरआरबी पीओ मेंस एग्जाम हो चुका है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या लाइंड अप है आपका इंटरव्यू। सो इंटरव्यू के रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी क्वेरीज पूछी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं क्या आंसर करूँ। सो सारे क्वेश्चंस का आंसर आज हम मिस्टर वेंकटेश्वरलू सर से पूछेंगे, जिनको 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो IBPS पैनल मेंबर भी रह चुके हैं। सो जैसे हमने देखा था, बहुत सारे बच्चों ने ये सवाल पूछा था कि है ना, इंटरव्यू में मैं अपना गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करूं, बिकॉज 2020 में आपने प्रिपरेशन की होगी, अब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका वो गैप ईयर, वो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे बच्चों को उस क्वेश्चन को रियल इंटरव्यू में कैसे जस्टिफाई करें वो नहीं पता होता है। सो हम सर से इसका आंसर पूछेंगे कि रियल इंटरव्यू में गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करते हैं। सो सर, हाउ टू जस्टिफाई द गैप ईयर इन द इंटरव्यू। excellent question. Yes. Nowadays, so many people are having this much of doubts, and we have come across so many people. An advantage this year is mainly COVID. 2 years, COVID has killed your time. So you need not be panic. But one thing, if it is more than 2 years, if it is 5 years, we have to justify, for which you can say automatically, my presence is needed in my residence, in my house, because of incapacitation of my parents, incapacitation of my breadwinner. So on account of that one, I have been forced to stay. I could not attend the examinations, or I attended but I could not come out successful. This will facilitate you automatically to take up the matter, and this gap will be covered. थैंक यू सो मच सर। सो होप सर ने आपका गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करना है उसको डिटेली आपको समझाया होगा। सो इस चीज़ का आप रियल इंटरव्यू में सर ने जैसे बताया वैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रियल इंटरव्यू में बहुत सारे पैनल मेंबर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे कि आपकी बैकग्राउंड ये थी, आपकी डिग्री ये थी, बट आपकी ये डिग्री हमारे बैंकिंग सेक्टर में कैसे यूजफुल रहेगी। सो इस क्वेश्चन को कैसे जस्टिफाई करें या फिर इसका कैसे आंसर दे, ये हम सर से पूछेंगे। सो सर, इफ पैनल मेंबर आस्क दैट यू आर फ्रॉम सो एंड सो डिग्री, सो हाउ दिस बैकग्राउंड ऑफ योर क्वालिफिकेशन विल हेल्प अस इन द बैंकिंग सेक्टर। सो इफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन गेट्स रेज्ड इन द रियल इंटरव्यू, सो हाउ टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Yes, it is a common question for all the people. If there is a, particularly they are engineering candidates, they are science graduates, so automatically how they are useful. If you are an engineering candidate, how bachelor degree candidates will compete with you? So there is a difference. But as of now, engineering candidates are most wanted in the banking industry for the reason technology upgradation is there. Everyone is useful for the technology. For agriculture, they are putting inputs of the agriculture. For other people, science graduate, they are doing some other innovations in the things. As of now, this artificial intelligence also entered into the banking industry. So subject is not the criteria, only your knowledge will be taken care, and all the group people. You can answer like this: yes, my mechanical engineering subject will helpful to the technology people who are coming for the availing of the loans, or any suggestions they require, I can give my input. This will help them. So all the graduates, irrespective of the curriculum, it is useful to the banking industry. So जैसे सर ने बताया था, technology does not matters, the answer which you give to the panel member that matters now. So sir, coming up with next question, the next question is, I guess, is really important. What is the question is that बहुत सारे एस्पिरेंट्स आके एग्जाम के बाद आके बोलते हैं कि मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, इंटरव्यू दे के आने के बाद बोलते हैं मैंने इंटरव्यू मस्त किया, सारे क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए, बट जब फाइनल रिजल्ट आता है बट उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सो एस्पिरेंट्स को पता नहीं को स्प्लिट अप ऑफ मार्क कैसे होता है। सो सर, हाउ द मार्क स्प्लिट अप इज देयर इन द रियल इंटरव्यू, बिकॉज मेनी एस्पिरेंट्स have this question in their mind right now. Yes, it is a very good question, and many people are having a doubt in their mind when we are attending interview in an excellent manner, but we have not selected. The main reason behind it is the examination marks also taken into account. Both main exam marks as well as interview marks
put together for the selection. So if there is a lesser mark in the main exam, automatically there is a chances of leaving. But if you are good in main exam and score the appropriate marks, interview marks will facilitate you to come out successful. You can see the failed candidates are missing only with 0.5 or 0.6 or maximum 1 mark. The reason behind it is main marks only and not interview. As far as interview is concerned, we are magnanimous. The panel members are especially to select you, they are sitting, not to reject you. It is only a selection process and not a rejection process. So, based on your dress code, your body language and knowledge about the subject, these things will be taken care. Your vocabulary, based on these things, we are giving marks, and marks will be in an appropriate manner. IBPS instructed us to see that the candidate go out with smiling face. So this is helpful to them. The main exam scores will decide your selection. सो जैसे सर ने बोला था आपका मेंस एग्जाम का मार्क रियली मैटर करता है, बट फिर भी आपको इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका ड्रेस कोड, द वे यू टॉक, आपका बोल्डनेस, आपके डिग्री या फिर आपके ग्रेजुएशन के रिलेटेड क्वेश्चन. सो ये सब आपको गो थ्रू करके जाने पड़ेंगे रियल इंटरव्यू से पहले. सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं ये है कि अभी रियल इंटरव्यू में मेरे ग्रेजुएशन या फिर मेरी डिग्री के बार का क्वेश्चन पूछा जाए तो आई कैन आंसर कि आई विल अपडेट इट लेटर, और अगर मुझे आंसर आता है तो मैं आंसर दे सकती हूँ. बट इफ़ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम माई डिग्री और फ्रॉम माई क्वालिफिकेशन बट उसका आंसर फिर भी नहीं आता है, तो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को और उस टाइप ऑफ सिचुएशन को हम रियल इंटरव्यू में कैसे टैकल करेंगे. सर, सो इन द रियल इंटरव्यू इफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम आर सिलेबस, फ्रॉम आर डिग्री, but we are not aware of the answer, then how to tackle that question and that situation in there? You have to remember your name. If you are not remember your name, who else will remember? So the subject, the topic only knows to you only. So whenever we are asking about your topic, you have to answer. Of course, sometimes you may miss it. Don't be panic. You can say, at this moment you are not in a position, but at the same time, you have to say something related to that one. But totally, if you are away, it won't look nice to you. So when you are appearing for the interview, just to go through the topics. We don't want any narration or in a descriptive manner. You go through the topics and it's relevant. That is more than enough for you about the subject. But one thing, while going for the interview, don't be panic. Don't be panic. Go in a confidence manner. Our earlier President Abul Kalam Sir said, forge your future, you have to dream. So your dream comes true if you go in a confident manner. So as far as interview concerned, don't worry about your subject. You know the topics, you highlight about your topics. Second thing, don't try to confuse the board members. We are well acquainted, we are well aware. So don't confuse the panel members. If you are unable to answer, just you can say, at this juncture, we are not in a position to answer. That will facilitate you, and the panel member will go for some other question to give marks only, not to punish you. So we are here to help you. Take our assistance. When you are not in a position to answer a panel member question, you can also switch over to the other panel member. They will feed you, they will help you. This type of attitude is always there for you. And particularly for woman candidate, there is one woman for board members, one panel member. You can take her assistance. She will describe what the question is, not the answer, but what the question is, we will feed you. So take care of these things and see that you have answering in a confident manner. This will help you to come out successful. Thank you. Best of luck with these guides.